Hello everyone, so in this video we will be learning how to connect an IR sensor with the Arduino. Let's start with a pin out. So here you have three pins, one is VCC, then ground and then out. So in any electronic module, if you see these two pins VCC and ground, then it means they are for supplying the power. So if there is any electronic device, then definitely it will need power for its internal operations. It cannot work without power. So here you will be supplying the power. So at the VCC you have to connect positive terminal of the battery and negative will be connected to the ground. So as soon as you connect battery between these two terminals, it will get the power and it will start working. Now you have another pin named out, so it is generating voltage, so you can read what voltage is being generated here. It will generate either low or it will generate high. We will see when it will generate low and high, but uh, you have to just read that voltage, like what voltage the sensor is generating at the out pin. So, like if we see on the other side, then you have two these LEDs coming out of here. So one is IR transmitter, like this is transmitter. So this simply sends IR waves. IR waves. It is constantly throwing IR waves out from here. And this is a photodiode. So if you have any object here, let me use this. So let's assume that this is an object in front of the IR sensor. So if the IR waves are going here and there is some object, then definitely this will reflect back the waves. Like the waves will just bounce from here and will be received by the receiver photodiode. So if the waves sent by transmitter are received by the receiver, then this LED, this one I'm talking about, this LED will just turn high. So if the waves are, let me use a different pen. If the waves are received back, then the LED will turn on, and also this out pin, this one, this out pin will be set to low. That means uh, a low voltage will be coming out of this pin. And if, let's say, I move this object very far, this object is very far, then most of these waves will just get scattered here and there, and almost no wave will be received back to the receiver. Like these waves will just transmit in the air, scatter in the air, and nothing will get received here. So in this case, if the waves are not received back, if the waves are not received back, then this LED will not get turned on. This will remain off, and this out pin will be set to high. That means a high voltage, that is 5 volt, will be coming out from here. Like low means 0 volt and high means 5 volt. So that's how it is working. Now let's discuss something about uh, trigger distance. Like what is this trigger distance? So let me erase this. So ऐसा मान के चलो कि जैसे अगर मैंने इसको पास में रखा, तो ये वाली जो वेव्स हैं
ये इसको रिफ्लेक्ट होके वापस मिलेंगी बिकॉज वो यहाँ से टकरा के वापस जा रही हैं। बट अगर मैं इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो हो सकता है अभी भी ये वाली वेव्स टकरा के वापस आएंगी। एयर में ज़्यादा स्कैटर नहीं हो रही वेव्स यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ, हो सकता है ये अभी भी टकरा के वापस आ रही होंगी और ये एलईडी अभी भी ऑन हो रही होगी, बट एक डिस्टेंस तो ऐसा आएगा। लेट से मैंने इसको इंक्रीज किया और ये वाला एक डिस्टेंस यहाँ पे आ गया। ये वाला डिस्टेंस जो आया, ये वाला लेट से ये वाला डिस्टेंस कुछ कुछ ऐसा था कि इसके बाद देखिए यहाँ पे वेव्स आना बंद हो गई, यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ रही। अब ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया कि एयर में ही वो वेव सारी स्कैटर हो जा रही है इधर उधर इधर उधर। तो यहाँ से टकरा के बाउंस होके वापस नहीं आ रही। सो मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद वेव्स टकरा के वापस ना आए रिसीवर के पास, उसको हम बोलते हैं ट्रिगर डिस्टेंस। This distance will be called trigger distance। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो यहाँ से वापस नहीं आ रही तो मैं इसको और इंक्रीज करूँगा तो भी वो वापस नहीं आएंगी। इस केस में मेरी एलईडी ऑफ ही रहने वाली है बिकॉज ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इसके बाद वेव्स वापस नहीं आ रही। यानी इस केस में मेरी जो ये वाली एलईडी है ये रहेगी ऑफ। दिस एलईडी आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस विल रिमेन ऑफ। बट इफ I decrease this distance till here, then also this LED will remain off. At this distance, at the trigger distance, it will remain off. But if I move a little bit closer, then this LED will start glowing. This will start glowing. And if you bring it further closer, then this LED will remain off. So I hope you understood what is the trigger distance. अब हमें ये बात करनी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो कलर है क्या वो और ट्रिगर डिस्टेंस, ये कुछ रिलेशन है क्या इन दोनों के बीच में? यानी अगर मैं ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करता हूँ तो क्या ट्रिगर डिस्टेंस भी चेंज होगा? सो आंसर है हाँ। और ऐसा क्यों? तो लेट्स से जब ये वेव्स यहाँ से आई तो कुछ तो यहाँ पे एयर में स्कैटर हो गई इधर उधर, जो कि वापस रिसीवर को नहीं मिलने वाली। और दूसरा क्या है कि ये जो कलर है दिस येलो और ब्राउन वॉट एवर इट इज, सो ये कलर भी कुछ वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को ही रिफ्लेक्ट करेगा। सो कुछ लॉस स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है तो कुछ लॉस एब्जॉर्प्शन की वजह से भी हो रहा है। सो अगर मैं ये ब्लॉक को हटा के अगर मैं इस ब्लॉक को हटा के इसकी जगह यूज करता हूँ एक वाइट ब्लॉक, तो इस केस में क्या फ़र्क पड़ेगा? सो वाइट, आपको पता है कि वाइट ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सो जब यहाँ से वेव्स आ रही होंगी तो वो टकरा लाइक कुछ तो एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो गई, बट इसने एब्सॉर्ब काफ़ी कम करी है, मेजॉरिटी इसने रिफ्लेक्ट कर दी तो इसको काफ़ी ज़्यादा लाइट मिल रही है। और अगर मैं डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा भी देता हूँ तो भी क्या होगा, एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो रही हैं बट इसने इसने एब्जॉर्ब कम करी और काफ़ी कुछ रिफ्लेक्ट करी तो अभी भी इसको वापस मिल रही होंगी वेव्स। जबकि जब हम पुराने ब्लॉक की बात करें जो हमारा येलो वाला ब्लॉक था, तो इससे आगे बढ़ाने पे वो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था वेव्स को, लाइक उसको इनफ वेव्स नहीं मिल रही थी फोटो डायोड को। बट अगर मैं वाइट वाइट ब्लॉक का यूज़ करता हूँ तो फोटो डायोड को अभी भी वेव्स मिलेंगी। और मैं थोड़ा और इंक्रीज करूँ, हो सकता है अभी भी वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस उसको मिल रही होंगी बिकॉज इसका एब्सॉर्प्शन कम है। बट एक डिस्टेंस तो आएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लेके गया और यहाँ ले जाने के बाद मैं इसका कलर दूसरा ले लेता हूँ। सो लेट्स से कि जब मैंने वाइट का यूज़ किया, सो यहाँ पे आने के बाद इसको वेव्स रिफ्लेक्ट होके मिलना बंद हो गया फोटो डायोड को। और इसके मैं आगे लेके जाऊंगा तो भी ऑब्वियसली उसको नहीं मिलेगा बिकॉज अब काफ़ी कुछ यहाँ पे स्कैटर हो जा रही हैं और थोड़ा ये एब्जॉर्ब भी कर ही रहा है, वाइट थोड़ा तो एब्जॉर्ब करता है। सो इसका जो ट्रिगर डिस्टेंस है वो येलो के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बोला जाएगा, वाइट ज़्यादा उसका ट्रिगर डिस्टेंस है लाइक हियर।
और क्या होगा अगर मैं वाइट को भी हटा के ब्लैक कलर ले आता हूँ। सो अगर मैं इसको येलो वाले ब्लॉक की जगह रखता हूँ तो क्या होगा कि ब्लैक, आपको पता है कि ब्लैक काफ़ी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत बहुत थोड़ी सी सेंड करता है। सो अगर डिस्टेंस ये वाला भी होगा ना जो हमने फर्स्ट केस में कंसीडर किया था, सो अब यहाँ क्या होगा कि कुछ तो हमारी एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो गई, लाइट इधर उधर बिखर गई, और काफ़ी सारी इसने भी एब्जॉर्ब कर ली। सो फोटो डायोड के लिए तो कुछ बचा ही नहीं रिसीव करने के लिए, और इसको वेव्स मिली नहीं, तो फिर हमारी ये वाली कंडीशन आ जाएगी, यानी एलईडी चलेगी नहीं और आउट पे हाई वोल्टेज आएगी। अब अगर मैं इसको थोड़ा पास ले आता हूँ तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर, यानी ये डिस्टेंस कम हो गया, इसके लिए एटमॉस्फेयर में अब कम स्कैटर होंगी बिकॉज इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ये एब्जॉर्ब काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, हो सकता है अभी भी इसको वेव्स नहीं मिल रही बिकॉज ये काफ़ी कुछ एब्जॉर्ब कर ले रहा है। मैंने डिस्टेंस और कम किया, एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो गई काफ़ी कुछ इसने एब्जॉर्ब कर ली, अभी भी वापस नहीं मिल रही उसको। सो हमारा अभी भी यही कंडीशन चल रही है, बट लेट्स से मैं इसको और ज़्यादा कम कर देता हूँ। तो एक टाइम पे तो इसमें भी ऐसा टाइम आ जाएगा कि लेट्स से ये वाला वो डिस्टेंस आया इस केस में, लेट्स से ये वाला एक केस ऐसा आ गया कि अगर हम मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया तो स्कैटरिंग भी कम हो जाएगी यहाँ पे, यानी इधर उधर वेव्स नहीं बिखरेंगी। सो जो लॉस हमारा कम हुआ उसकी वजह से थोड़ी बहुत वेव्स हमें वापस यहाँ पे फोटो डायोड पे मिल जाएंगी, जिस वजह से मेरा केस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी उसको वापस मिल रही है वेव्स। इसके लिए ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी और आउट जो है मेरा है वो लो हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर मैं इसको और पास लेके जाऊंगा तो भी मेरा केस यही वाला रहने वाला है, बिकॉज आप जैसे जैसे डिस्टेंस कम करोगे तो स्कैटरिंग कम ही होने वाला है, और स्कैटरिंग कम होगा तो वेव्स रिटर्न मिलेंगी इसको। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ एन IR sensor works and what is trigger distance and how the trigger distance is related with color of the object. So with the black, this one, here the trigger distance is less. With the white, the trigger distance is more. And if there is some color in between, then the trigger distance will lie in between the white and black. Now let's see how we can use it with Arduino. So here I have this IR sensor. So I'm connecting a red jumper wire with the VCC. You can see here, like at the top you have VCC. So I'm connecting a red wire here. Then I'm using a black wire for the ground. You can see here it is. The second one is, middle one is ground. So I'm connecting a black wire here. Now let me use an Arduino to power it. So I'm connecting the red wire, that is VCC, to the 5 volt. So here it is 5 volt, and I'm connecting the black wire, that is the ground, to ground of the Arduino. Now you can see here, like as soon as I just supply power, the required power to the IR sensor, then some of the LEDs start glowing. Now let's see how it detects the objects. So this LED will remain turned on like as soon as the IR sensor is getting powered, but this LED will like toggle between on and off depending on whether there is an obstacle in front of this or not. So uh, currently the LED is off, means it is not detecting any obstacle in front of it. Now let me bring my hand closer to it, like here. So the LED is glowing. So this is the trigger distance in this case. If I'm moving my hand farther, then the LED is off. If I bring closer, so this is the trigger distance. Now if I move my hand still closer,
then it will just keep on detecting that there is some obstacle in front, and after trigger distance it is not detecting any obstacle. Also, I need to tell one thing, that you can see this blue part here. So this is called potentiometer. So by like just rotating the screw, by revolving knob of the potentiometer, you can change sensitivity. So in this case, like currently, this is the trigger distance. But what will happen if I change sensitivity of this IR sensor? So I'm just revolving it now. You can see that it is not detecting obstacle, still not detecting, and now it is detecting. So by changing sensitivity of the potentiometer, I have reduced the trigger distance. Now I can still reduce it further. I can again rotate this. Now it is, now this is the trigger distance. Now can I reduce it further? So not detecting, not, now it is detecting. So the trigger distance is this position now, but in the first case it was this. So that's how you can change sensitivity of the potentiometer by using the potentiometer. Now let's see how color of the object affect the trigger distance. So here I have a white paper over which I have pasted some black tape. So if I keep the air sensor above white surface, now let's see what is the trigger distance for white surface. So I'm moving up, but it is not getting triggered, still not getting triggered, and this is the trigger distance. So above this it will not detect the white surface, and below this distance it will detect that there is some obstacle beneath. But if I move it above the black surface, then it is not detecting here. Although this was trigger distance for white surface, I'm moving down, 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 and it got triggered at this distance. So this is the trigger distance for black, and this is the trigger distance for white. So I hope you have completely understood how an IR sensor works. Now we will be starting how to just connect this with Arduino, take the readings and print over the screen. So whenever you are writing any Arduino code, so first of all, what you have to do, you have to write the skeleton code, that is void setup and void loop. Okay, now what I'm supposed to do now? So let's start with the connections. So until now, what we have done is we have just powered the IR sensor with the Arduino, but we haven't yet connected this out pin. This out pin is still to be connected. Now my question is, where shall I connect this pin? Where shall I connect this pin? Like, will it get connected to the power pins here, or will it get connected to the analog pins or digital pins or especially PWM pins? So where shall I connect this pin? So as I told you that this out pin will generate either high volt or it will generate low volt, that is either 5 volt or 0 volt. And what you have to do, you have to read that voltage. So I hope you guessed that we must connect it to the digital pin, and then we will be making that digital pin as input so that we can read the voltage. So let me use a wire of different color, let's say white, to connect the out pin from IR sensor to the digital pin of the Arduino. Let's say I'm using pin number 7. I'm using.
Now let me jump back to the Arduino IDE. So here what I have to do. So I have to use pin mode function to declare the seventh pin as input. सो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अब मुझे डिजिटल रीड का यूज़ करना है इसकी वोल्टेज पढ़ने के लिए बट ये जो डिजिटल रीड वाली लाइन है इसको मैं लिखूँ कहाँ पे क्या मैं इसको सेटअप में लिखूँ या फिर मैं इसको लूप में लिखूँ इसको कहाँ लिखना सही होगा सो अगर मैंने इसको लिखा सेटअप के अंदर तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जस्ट स्टार्टिंग में तो वो डिटेक्ट करेगा कि ऑब्स्टिकल है सामने या नहीं है और मुझे बताएगा बट उसके बाद वो नहीं बताएगा बिकॉज लूप में मैंने उसको नहीं बोला कि बार बार डिटेक्ट करो तो अगर मैं इसको लूप में लिख दूँ तो क्या होगा वो बार बार चेक करेगा कि अभी कितना वोल्टेज है अभी कितना वोल्टेज है अभी कितना वोल्टेज है यानी मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मिलेंगी कि अभी हाई है ये लो है हाई है ये लो है बट इस केस में अगर मैं इसको सेटअप में लिख देता तो क्या होता कि जस्ट जब मेरा कोड स्टार्टिंग में रन होगा तो वो डिटेक्ट करेगा कि ऑब्स्टिकल है या नहीं है बट उसके बाद डिटेक्ट नहीं करेगा सो आपको इसको लिखना होगा लूप के अंदर और बिकॉज ये फंक्शन रिटर्न भी करता है सो यू हैव टू मेक अ वेरिएबल फॉर दैट let me declare a variable here so I'm writing int v let's say or a I can use I'm writing int a so I'm declaring a variable in the global scope now here I'm writing A is equals to digital read 7. So whatever voltage is being read from the seventh pin that will get stored into the variable A. Now you have to print this. So how you will print this? So whenever you have to print anything, you have to write serial dot begin 9600 in the setup and in the loop you have to write serial dot print ln and within the parenthesis you will specify what you are going to print what the Arduino shall print over the serial monitor so I have to print the value of a so I'm writing this line now let's upload this code to the Arduino. Okay, done uploading. You can open the serial monitor from here. And this is printing 0. 0 means it is detecting some obstacle in front of it. So now here is our eye sensor. It is not detecting any object. Now I'm bringing my hand closer. It is detecting. So if I keep it here, it is detecting no obstacle obstacle no obstacle so like this it is printing 1 means high 0 means low 1 means 1 means high or you can say there is no obstacle in front of the air sensor and 0 means low that is there is some obstacle in front of the air sensor so that's how it works. I hope you have thoroughly understood how an air sensor works and how to use it. Okay, thanks for watching.